So today I want to start my speech by telling my friends in the BJP and the RSS about the ideas the entire opposition used to defend the idea of India. So I'd like to start by showing an image of our refuge. The first idea in the image that we defend is the idea of confronting our fear, of never being scared. In fact, Shivji places death 1 inch from his neck. Behind the left shoulder of Shivji is the Trishul. The Trishul is not a symbol of violence. It is a symbol of non-violence. That is why it is placed behind his left shoulder. Now, there is a third idea, and that idea, of course, it is a symbol that many of you hate, but that idea is the Abhay Mudra, the symbol of the Congress Party. Abhay Mudra is the idea that it is not good enough to just keep this internal. It is not good enough to not be scared. It is not good enough to use non-violence. It is also important that you make others not scared, that you help others become fearless, that you help others become non-violent. It is not just one religion that talks about courage. So, here is the religion of Islam. मतलब इस्लाम में भी कहा गया है कि डरना नहीं। गुरु नानक जी के चित्र में भी आपको अभय मुद्रा दिखाई देगा। गुरु नानक जी भी कहते हैं कि डरो मत, डराओ मत। और जीसस क्राइस्ट की इमेज देखिए, उसमें भी आपको अभय मुद्रा दिखाई देगा। उसके बाद बुद्ध भगवान अभय मुद्रा, और अंत में महावीर। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता, और बीजेपी 24 घंटा नफरत हिंसा नफरत हिंसा नफरत हिंसा। ये ठेका नहीं है बीजेपी